Hello, ladies and gentlemen. Once again, this is Neeraj Goyal, your host on Coach Speak by R by RDMR. I have something an excellent, personality with me with some interesting viewpoints, and the subject for today is Vastu. Can you imagine we are talking about Vaastu Shastra today? And I have, the leading personality who is a Vastu specialist for quite some time, and she is doing practice for more than 20 years now, especially working for and is founder director of IP Vastu based in Nagpur and currently working throughout India and, of course, giving consulting approach to multiple international clients as well. Let's talk about architect Mala Dwivedi and her journey as Vastu specialist. Welcome, Mala. How are you? I'm very good, sir. Very good. Excellent. So, Mala, just to begin with, let's talk about you and about your company and a lot of other things about Vastu. I would request if you can put some great lights on Vastu, inputs for the viewers and the listeners to in the today's the podcast. So, the first thing first is uh, why how have you started this particular journey as your career? Why did you choose Vastu or architectural as your career? How did you start it? As it, So yeah, this is a question that is really important to understand that being an architect, why I chose as a Vastu consultant as my career. Because excellent. um, in my own house, I have seen the bad effects of the Vastu. Uh, Oh, we we used to live in a castle with our parents, but the architect hasn't followed even the basics of Vastu in the planning, and I saw the deterioration in my own house. मैंने oh, देखा है it कि started within. yes, yes, that is all Oh, self analysis. ha, पंद्रह ha, बीस ha. सालों में मैंने जो डिटोरिएशन देखा है कि अगर मैं आपको आपकी लाइफ में बोलूं कि नीरज जी आपको आपकी लाइफ में 5 चीजें क्या नहीं चाहिए, तो जो आप बोलेंगे ये मुझे नहीं चाहिए वो सब मैंने अपने घर में देखा है. और जब we convinced our father to change the house because he was not ready to leave his castle, because उन्होंने हाँ, बहुत प्यार से बनाया था उस घर को. जी द जी टाइम वी लेफ्ट द हाउस एंड वी सी जो चीजें बिगड़ी थी. जब मैं वास्तु के बारे में पढ़ना शुरू की, आई बिकेम द मास्टर इन दिस. आई कन्विंस माई फादर टू चेंज द हाउस. फाइनली ही गॉट कन्विंस्ड, ही चेंज द हाउस एंड आई सी कि जो हमारी चीजें हाथ से छूटी थी, जो पापा को फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे या जो भी हुआ था, वी रिकवर्ड एवरीथिंग इन रिलेशंस टू. So I have seen it very personally, and being an architect, I know the value of the inputs that client require. एक client का एक घर बनता है तो वो उसके जीवन भर की कमाई उस घर में लगाता है. And if the vastu is basics, vastu is not implied while planning, while interiors, वो घर चाहे करोड़ों का हो, वो अगर उसको घर में सुकून नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, पीस नहीं है, तो दैट इज ऑफ नो यूज. आज जो मैं आपको अपने घर की बात कर रही हूँ, वो घर आज इट वर्थ मोर देन 10 crores, बट वो बंद पड़ा हुआ है सर, क्योंकि उसमें करेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, इतना रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो चुका है. सो आई ओह अर्ज ईच एंड एवरीवन कि प्लीज फॉलो द बेसिक्स इन ऑल द प्रेमाइसेस. wow no I think it's directly coming from a heart जो आपने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है वो उसने आपको मोटिवेट किया कि भैया इस चीज को और लोग ना भुगते हैं तो मैं इस चीज के ऊपर कुछ काम करूं यस, ये बहुत बहुत एब्सोल्युटली, अच्छा दिस थॉट इज है द रीजन. बहुत बढ़िया थॉट है तो ये क्या बेसिक ऐसी चीजें होनी चाहिए माला जी जो अ, मैं ये समझता हूँ कि पीपल आर नॉट वेरी मच it's kind of not affordable for many people to do a vastu consulting approach sometimes but what are the very few key elements anybody who is uh, creating his house or office or factory I think these are all so यस. we will talk about all this. So I will just ask you, what are the two or three elements which should be the basic of Vastu to at the time when we are making our houses or home. देखिए सर, जो चाहे हम कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, चाहे रेसिडेंशियल, ये दो तीन की पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. एवरी सिटीजन इन द वर्ल्ड शुड नो दिस, कि ये Okay. हमें सबको मालूम होना चाहिए. सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी तरह के रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस को चूज कर रहे हैं, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए.
प्लीज अवॉइड टॉयलेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और Okay. अगर वो हैं तो उनकी वेरी क्विकली रेमेडीज करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो भी घर में अर्निंग मेंबर है, प्लीज डोंट सी दिस क्राइटेरिया एज ऑन एज कि हमारे दादाजी सबसे बड़े हैं तो वो वहां रहेंगे, जो एक इंडियन माइंडसेट है। एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन इन द वर्ल्ड शुड चूज अर्निंग मेंबर का बेडरूम जाना चाहिए साउथ वेस्ट में। दिस इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये दो चीजें हमें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। अगर हमारा यही कमर्शियल है, आपका ऑफिस है, तो आपका कैबिन नीरज जी साउथ वेस्ट में चाहिए, चाहे आपके ऑफिस का प्रीमाइसेस 1500 फुट हो, 1200 फुट हो, 800 फुट हो, डजंट मैटर्स, लेकिन आप आपके प्रीमाइसेस के साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। लाइकवाइज इन योर रेसिडेंस यू मस्ट स्लीप इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस। सो दीज आर द टू थिंग्स, ये अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो यू आर 50-60% ओके बाय योरसेल्फ। Oh, so direction plays a major role here, basically, you're talking. मेजर रोल, एवरीथिंग एल्स इज टोटली बकवास। लाइक एक इसको एक फियर फैक्टर से जोड़ा जाता है, इसको एक सुपरस्टिशन से जोड़ा जाता है, इसको एक हाँ, रिलीजन से जोड़ा जाता है, तो ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। वी आर केटरिंग टू ऑल द कास्ट, ऑल द रिलीजन इन द वर्ल्ड, so it is हम्म। not a criteria and it is not limited to a particular caste of the society, no. That's an excellent point. ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि people are actually relating it to religion and caste and creed and all of that, but that is nothing related to it. It's always about the positive energies and the directions. It's always So about the direction, always, always. coming to this, माला जी, इसमें क्या myths हैं? क्या इसमें ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये myth है, ये ऐसा नहीं है, इसका ये कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैली है, ऐसी कुछ मिथ्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए? बहुत सारी मिथ है सर, और हम वही काम करते हैं डेली उस मिथ को ब्रेक करने का। अच्छा। आर्किटेक्ट्स, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स को इतना कंफ्यूजन है इन चीजों में। वी आर डेली मीटिंग 1 or 2 आर्किटेक्ट, आई एम जस्ट टेकिंग अ डाउट क्लियरिंग सेशन, कि मैं सिर्फ उनके हाँ। डाउट क्लियर करती हूँ कि भाई ये दो, जैसे इंटरनल डोर्स, आप फ्लैट में जा रहे हैं तो बेडरूम के डोर्स पे क्लाइंट कंफ्यूज रहता है। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज, टॉयलेट सीट नॉर्थ साउथ होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए, दैट इज ऑल बकवास, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सो ओके। ये, यस, दीज आर द टू मेजर मिथ। उस पे वास्तु वाले बहुत प्ले करते हैं, एंड दे आर जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द बिलीफ सिस्टम ऑफ द क्लाइंट। दिस इज वर्स्ट इन आवर प्रोफेशन, आई कैन से, and हम्म। 90% of the practicing vastu consultants are taking advantage of the fear factor of the client or belief system of the client. That is wrong in our profession. दैट इज, आई एग्री सेइंग दैट डराकर थोड़ा सा बेनिफिट लिया जा सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, this is wrong. एंड पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट, यू आर सेइंग, Yes, yes, most of the, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो yes. कैसे कैसे ध्यान रखें कि वी डोंट गेट इनटू सच काइंड ऑफ ट्रैप? हमें बेसिक एक आर्किटेक्ट या एक वास्तु कंसल्टेंट चुनने के टाइम हमें क्या पता होना चाहिए कि भैया ये अच्छा आदमी है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा? सर मैं सबको सबको मैं यही एजुकेट करती हूँ, स्टार्ट आस्किंग व्हाई। अगर मैं आपके घर पे विजिट कर रही हूँ और मैंने बोल दिया कि नीरज जी आप ये यहाँ से हटा दीजिए, यू कैन आस्क मी व्हाई शुड आई, मैं इसको क्यों हटाऊं। और अगर आपको मेरा रीजन स्ट्रॉन्ग लगता है तो ही हटाइए, ब्लाइंडली किसी की भी बात मानना बंद कीजिए। आस्क फॉर द रिपोर्ट। अगर आपका 2 BHK विजिट हो रहा है, यू आस्क वास्तु कंसल्टेंट टू गिव द रिपोर्ट इन राइटिंग। अच्छा, अच्छा। So we usually give, and this should be the system of work. So, मतलब it दैट्स द should be आइडियल वे the, ऑफ डूइंग। यस, यस, यस। yes, आपका, आपने विजिट किया, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी सजेशंस क्या है, एंड इफ रेमेडीज आर देयर, व्हाट आर दे। वी हैव टू आस्क द कंसल्टेंट फॉर दीज थिंग्स, एंड इफ ही इज गिविंग, देन यू कैन गेट ऑल योर आंसर्स। रैंडमली किसी की भी बात को नहीं मानना चाहिए। इंडिया में ये हाल है, एवरी फिफ्थ इंडियन इज अ वास्तु कंसल्टेंट। अच्छा, सब गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। Global university is very harmful for some subjects. उसमें एक वास्तु भी है कि मतलब इसको बहुत, और जनरली वास्तु विजिट में जब क्लाइंट या आर्किटेक्ट कॉन्फिडेंट होता है कि यहाँ पे हमने पूरा वास्तु कंप्लायंट किया होता है,
हमारी विजिट के बाद हम सिर्फ एक ही गलती निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वास्तु विजिट में कोई लिस्ट ऑफ रेमेडीज या लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स निकलती है, एक या दो ही निकलती है और उसको अपन ठीक कर देते हैं तो क्लाइंट को रिजल्ट आते हैं सर। आज टुडे मॉर्निंग आई गॉट अ वेरी गुड टेस्टिमोनियल फ्रॉम द क्लाइंट। Very nice. What is it all about? Sir, it was about a factory visit near Nagpur. It was a scaffolding manufacturing unit. वहां पे Okay. मैंने सिर्फ उनका एक 12 बाई 15 का पिट क्लोज करने बोला था। मैंने कहा सर अपन इसको क्लोज करते हैं, विल सी फॉर 3 मंथ्स, आपको चेंजेस आएंगे, देन विल मूव अहेड, क्योंकि वो क्लाइंट बहुत लॉस में जा रहे थे। Okay. आज उनका टेस्टिमोनियल मुझे फोन आया सुबह कि उनकी 3 मेजर डील्स कन्वर्ट हुई है एंड ही इज सो हैप्पी। Wow. Wow. So so ये बेसिक एक छोटी सी रेमेडी है कि पिट क्लोज किया और उनका बिजनेस यस इमीडिएटली ग्रोथ हो गया। यस, ये क्योंकि दिस इज दैट वाज द वेरी मेजर गुड। डिफेक्ट और वो क्लाइंट समझ नहीं पा रहे थे। Oh, yeah, we call it as a major defect. Okay. हाँ। Okay. Uh, Very nice. Malaji, I think, people who are listening to you right now is actually gaining a lot of insights about this and the myths are getting break. इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपने मुझे बताया कि होम रेमेडीज अलग हैं, ऑफिस की अलग हैं, फैक्ट्रीज की अलग हैं। तो इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं या ऑलमोस्ट सेम ही होता है? सर हर प्रेमाइसेस के स्टडी और इट इज कम्प्लीटली कस्टमाइज, क्योंकि अगर कोई स्पेस है तो वहां पे इसमें कोई थंब रूल या एक रेमेडीज में हम किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कहीं पे एक 2 BHK में इतनी रेमेडीज होती है कि वहां हमारी हमारी टीम 2 दिन काम करती है, और जैसा जिस टेस्टिमोनियल के बारे में मैंने बताया वहां मेरा विजिट सिर्फ 10 मिनट का था। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया, मतलब वहां पे क्या कितना वहां पे इंटरेस्ट है। आ यस, जाए तो ऐसा। ओके ओके ओके। कई साइट्स तो मैं वीडियो में देख के उनको ऐसे ही बता देती हूँ सर आप ये कर लीजिए, जब सब ठीक हो जाएगा तब ऑफिस आइएगा मिलने, तो दैट वे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So this company which you are formed, how so can you give us more insights about how IP was to formed and what is IP in between and कब से ये काम कर रही है और कौन से एरिया में इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है? सर हम बेसिकली 2007 से कम्प्लीटली वास्तु कंप्लायंट आर्किटेक्चरल प्लान्स एंड रेमेडीज पे पैन इंडिया काम कर रहे हैं, एंड 2014-15 से हम अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं। हम एज पर द क्लाइंट इन द कंट्री हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लॉट साइज के हिसाब से उनको आर्किटेक्चरल 2D प्लान बना के दे देते हैं, दैट इज वास्तु कंप्लायंट। और वो प्लान हमसे लेके अपने लोकल आर्किटेक्ट से कनेक्ट करते हैं एंड दे विल गेट इट डन विद द लोकल रूल्स, लोकल अथॉरिटी रूल्स के हिसाब से they get modified and rechecked by us. That way we work. And remedies पे भी सर we work pan India. इंडिया में हमारी पूरी टीम विजिट करती है और काम लेने के बाद एट द मैक्सिमम स्पैन ऑफ 14 डेज हम कोई भी साइट का काम कहीं भी खत्म कर देते हैं। और अक्रॉस द ग्लोब सर आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड होने का फायदा मिलता है कि हमारे पास अमेरिका का एक प्लान आ गया और उसका एक वीडियो आ गया ना, तो हमको वो घर ऐसे समझ में आ जाता है कि फिर क्लाइंट हमसे कुछ भी पूछता ना कि इस बेडरूम में ये क्यों करना है, तो हम उसको यहीं से बता पाते हैं कि क्यों करना, और वो भी अमेज्ड होता है कि एक वीडियो और एक प्लान से ये मेरे घर को कितना अच्छे से रीड कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड का। जी जी जी। तो इस चीज को ये मतलब रिमोटली किया जा सकता है, इसमें ज्यादा विजिटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके। सर एंड इंडिया दैट में पूरा विजिट हमारी टीम करती है, और इंडिया के बाहर में इतना सब कुछ सिस्टमैटिक है कि प्लान और वीडियोस अपने आप आ जाते हैं। Okay, so if somebody wants to have a reading or have online consulting, they have to just send you the video of the place and एंड some अ प्लान। information about the plan. So you can completely analyze and tell them that these are the few things which you can do and things will be improved. Something like By that. analyzing, we can tell them what problems they were facing, and if that matches, then we come to the remedy part, and that exactly matches because of the experience. So conversion ratio is 99%. So based on the reading, you tell them that these may be the issues you are facing, and to if that matches to your judgment, that trust factor get created, Yes, and then they start to listen to you. हाँ, That's an amazing job. That's an amazing thing. Okay. yes. So Malaji, who all are your partners? Are you the only one who is taking over this, or there are few other founders, members, or?
anyone else who is supporting you in this? Sir, I have a great support system behind me. I have a good team behind me so that I can work pan India and across the globe. Face is Great. mine because it is the trust factor. People can see me, can talk to me. Uh-huh. Till the uh, I can say till we finalize the project, I am the first phase. After that, executing team is very good with us, who execute the sites very fast. And everything is under my control, and we believe in teamwork. You believe in teamwork. Of course, I understand that. That's excellent. So, Malaji, let's move on to asking about somebody who wants to build a career in Vastu specifically. What is the career ladder be like from the schooling and to move on to the success level where you are right now? How long does it take and what all studies they have to do to reach up to this level? सर आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्योंकि इसमें मेरा एक थोड़ा पर्सनल फैक्टर था कि मैंने ये फील्ड क्यों चुनी और मेरी रीडिंग कॉलेज के आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर से मेरे पास वास्तु के बुक्स होते थे वेर एवर वी आर ट्रैवलिंग आई हैड अ बुक ऑन वास्तु फ्रॉम ऑफ एनी राइटर फ्रॉम एनी शॉप इन द एरिया सो Oh my God. टू द मैटर ऑफ Yeah, फैक्ट so पहले intrigued and more passionate you are since the beginning. Matlab, यस it और was not a career option for you, but it is more of a passion for you. यस सर और मैंने कभी किसी से वास्तु सीखा ही नहीं है आई डिडंट मतलब मैंने कोई कोर्स कुछ भी नहीं किया हुआ है अच्छा, अच्छा बिना कोर्स किए आपको इतनी पढ़ के इतनी नॉलेज आ गई है काफ़ी टाइम से और इसको पैशनेट तो इस चीज़ को अगर कोई करियर बनाए, कोई स्टूडेंट है जो आपके आप आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे आर्किटेक्ट वाले, जो बोलते हम्म होंगे मैम हमें इस एरिया में भी आगे बढ़ना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे आगे बढ़े? सर यहाँ पे अभी मेट्रोज में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं तो कोर्सेज करना एक होता है कि हमें सिर्फ समझ आ जाती है जो कि बुक रीडिंग से भी आ जाती है इसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूअस वर्क और एक्सपीरियंस हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात कर Yes, रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है सर आप कंटिन्यूअस एक जैसे साइट्स देखते हैं तो आपकी एक बेसिक गाइडलाइंस खुद बन जाती हैं जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलते हैं सो बराबर। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड ने मुझे बहुत टेक्निकल सपोर्ट दिया है वास्तु को एक अच्छा एक मतलब अच्छा स्ट्रीमलाइन करने में यस और कंटिन्यूअस वर्क सर स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मैंने फ्री में भी बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि मुझे सिर्फ काम समझना होता था विद अ फीस ऑफ 200 रुपीज 500 रुपीज सो मेनी वर्क आज भी मैं फ्री में करती हूँ जो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते सो कंटिन्यूअस वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और अपनी गाइडलाइन खुद बनानी पड़ती है सो इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिस्टमैटिक वे नहीं है इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का और लाइक ग्रेजुएट होने का आप मुझे बोल रही हैं कि एनीबॉडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ वास्तु शुड बी मूविंग अराउंड लुकिंग एट द प्लेस वो खुद का एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश करता है ओवर द पीरियड ओवर द एक्सपीरियंस टाइम जब वो उस पे लगाता है तो वो खुद ही मैच्योर होना शुरू हो जाता है उसमें ऐसा। एब्सोल्युटली राइट सर हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको तो काफी टाइम हो गया है इसमें तो आपको आप तो शायद चेहरा भी पढ़ लेती होंगी अभी। नहीं सर मैं सिर्फ घर पढ़ती हूँ बहुत अच्छा। तो इसको इसको आगे फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में आपने क्या सोचा है माला जी कि आईपी वास्तु का आगे का फ्यूचर क्या है? हाउ आर यू डिजाइनिंग इट एज अ कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द माइलस्टोन्स हैव यू केप्ट फॉर फ्यूचर कि इसमें और ये करना बाकी है या इस चीज को और कहीं फैलाना है या कुछ लॉन्च हो रहा है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट या कुछ कंट्रीब्यूशन ऑन वास्तु इटसेल्फ यू हैव क्रिएटेड बाय योर ओन कुछ इन्वेंशन किया है कुछ आपने कुछ ऐसा So कुछ? we are taking continuously free workshops in interior colleges, in architectural colleges in and around Nagpur. So we are giving free demonstration and basic guidelines to the architects, budding architects and budding interior designers, so that while making anybody's dream house, they should not commit the basic mistakes, basic guidelines they should not avoid, so that their client will suffer throughout their life. So we are taking free workshops in the colleges. एंड यस अभी तो पूरी दुनिया बाकी है सर अभी हम दुबई में भी काम शुरू कर रहे हैं 6-7 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं राइट नाउ वी आर हैव अ वेरी गुड एसोसिएशन इन नीदरलैंड so I have been associated with an architect there so that way अभी तो काम चल ही रहा है सर और बढ़ना ही बढ़ना है
वेरी नाइस। सो ऐसा क्या आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहती हैं आज के यंग जनरेशंस को, या एनीबडी हु वांट्स टू, हु इज नॉट वेरी कीन अबाउट वास्तु, या वो इसको बोलता है कि ये दिस इज नॉट अ राइट सब्जेक्ट, या इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता है, जैसा आपने बोला बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है, हम्म। तो बहुत सारी इसमें बिलीफ सिस्टम की जब बात आती है तो इसमें डिवाइडेशन होती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो उसके गुड और बैड इफेक्ट्स को ज्यादा उस हिसाब से देखते नहीं है। ये जो बिलीव नहीं करते उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, कि उनको कैसे समझाया जाए कि भैया दिस इज अ साइंस एंड देयर इज अ नॉलेज एंड देयर इज अ रिसर्च बिहाइंड इट। तो यस। उसके उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सो मेरा मैसेज अक्रॉस द ग्लोब यही है कि जो लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, हाउस, ऑफिसेज हैं, सब जगह वास्तु फॉलो होता है, एंड वास्तु इज अ साइंस ऑफ डायरेक्शन. Like we are giving importance to architectural drawings, we are giving importance to structural drawings, why not we should consider vastu as a channel to create a house? Why we are avoiding that important channel? This only brings the required thing that you are working throughout your life is for money, mental peace, good health, good relations in the house, that can be only achieved by the just implementing basic guidelines in your house, in your offices. And if you are unable to do so, you have already purchased a house where you can't do any civil changes, we can do certain remedies at a peanut cost looking at your house, and you can start feeling changes within a month. I can give a surety of that. और वास्तु में एक सबसे important चीज है, you must connect right person, you meet people, talk to the consultant, ask question, get the answers, and if you are satisfied, then only go ahead. Don't follow any blind guidelines of any consultant. Just ask why. Just ask why is the key mantra which you want to give to the people if Yes. they are considering Vastu, No blind instructions, please. or blind instructions. No, I think that makes perfect sense. We cannot just go blindly and follow anybody's instruction. It may also Yes. deprive the existing situation also if Yes, yes. everything is correct, Most of right? the time. Most of the times. Of course, of course. So moving on to this Vastu as a study, India, I understand people are more aware about this study, and they've been following this for ages, and since the history which we know. How about the other countries? Is it famous there as well, and is it something else called, or how is it related there? So everybody call it as a Vastu only, and it is being practiced and followed in many of the countries. Like nearby country, we can say Sri Lanka, Burma. People are following like anything, like Okay. more than us. And I Oh. have consulted so many Muslim clients in and around Nagpur. आप और मैं तो Uh-huh. फिर भी बोल देंगे कि इंटीरियर्स के लिए एक दो चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लो. They asked me not to break even a single rule while following Vastu in interiors and in designing. So people Oh. are very much aware, and one who took the advantage and had felt the difference after the Vastu remedies. So they are the blind follower, and they know the importance of being in the right Vastu premises or homes. So Canada, maybe I have consulted. The client was British. I have consulted Georgia. The client was British or kind American kind person. So many countries I have consulted, and they are taking our advice as a milestone, that they don't divert even a step, anyways. And we got a chance to consult in Hawaii Island in America. So we consulted in the basic guidelines of ISKCON temple there. Oh, okay. So it's Yes. it's it's a world phenomenon right now. It Yes, it, yes. it is not limited to India or anything, So it's but like people yoga. Yoga. Yoga is originated in India, but it is practiced more in foreign countries. yes, Like, I am sure. Yeah, you've given a right example. Yeah, so see, more and more people are getting aware and getting experience of the outcomes. I think it is creating more valuable, thought process in their mind, that yes, this is something which they should be looking at. And as you said that, temples, and it is not related to religion or caste or anything. It is just a directional science, and people should understand.
where are they facing, how are they sitting, how are they sleeping, and everything could create a very good vibe and vibrations. I'm not sure, but actually it is creating something which is positive energy around. Yes. And very nice, very nice. All right, at the end, Malaji, I just want to understand, the final take on uh, how people should be connected to you, and what kind of the platforms which they can reach out to you. Is it only on phone, or it can be through video conference, or you, as you said, you can have a look on the video side and give them a consulting approach. So how people should be able to get in touch with you? So they can connect me through phone, through WhatsApp. We have our email IDs in on every post. So as Okay, soon as we got the response, we can get back to them. We can help them. We can guide them as much our possibilities. brilliant. And do you also do a some? You also said that you are doing some free consulting for the people who cannot, who are Yes. not, ready to invest in this at this point in time. So maybe you can give them some basic ideas to start with, and then So that we they do can. daily. That we do daily. If somebody come up with a plan and they have only one or two queries, we don't charge them. उनको हम ऐसे ही बता Mhm. देते कि आगे चेंजेस करिए, आपको 110% चेंजेस आएंगे, देन विल गो फॉर द रेमेडीज. क्योंकि कुछ पार्ट में रेमेडीज होती है तो हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में दे वोंट गेट रेडी. दिस इज द हाँ जी, लीस्ट हाँ जी. केस. यस वी डू. Okay. Wow, I think that is an excellent way of sharing and caring for the people in terms of, because I would definitely want to keep it as a caring model, because you are actually providing them a direction of living, and it in terms of whatever you can do in terms of architect or vastu, and changing the life of the people. And this comes from very personal experience which you shared, that Yes. you have gone through all the bad things and you definitely don't want this to happen to the people across, True. and you are studying this since the beginning of, I think from the childhood you are reading the books. From This college time. creates a from college time, I agree. And you are sharing knowledge, experiences time and again. People are coming at you, and globally now you're working. I think that's a commendable job as a woman and entrepreneur. You are actually achieved so much, and we congratulate you for that. And I believe that most of the people who are listening to you today and watching you, they are getting not only inspired, but they are definitely wanting to be someone at, at your level, at or if definitely they want to be reaching out to you for some vastu corrections in their home houses and offices as well. So thank you very much, Malaji, for joining in today. It was a lovely session. Great insights on, the small tips of the Vastu which you have given, and you told me that is a global phenomena like जी. yoga. People are following it blindly. It's just that you need a right consultant. You should ask why as a question. Don't follow blindly. Are certain key points which we are taking it away today, and we hope all the best to you, and we take care of the rest of the things for the branding part of it, of course. So thank you, Malaji, for joining in today. It was a great learning session for all of us, and I once again congratulate you for the same. What Thank is the you so last thing we want to say? Last thing is, we must keep our premises, our house, our homes, our offices Vastu compliant, and we can certainly remove unnecessarily hurdles and speed breakers in our lives. So that can be done by Vastu correction very, very, very easily. Wow. Great. So that was, ladies and gentlemen, architect Mala Dwivedi, the specialist of IP Vastu, based out in Nagpur, and I'm sure you want to reach out to her. Her detailed contact details will be there in this podcast, in the in the, the section below. You can anytime reach them. Stay tuned for further actions, and try to meet more people on Co Speak by R. This is your host Neeraj. Take care of yourself. Thank you very much. Bye bye.